The amount of money you make in your life is directly tied to the quality of your output. It's not just about working super hard. And as a student or young professional, if you know how to intelligently use AI, then nothing can stop you from having a well-paying, stable, long-term career. I recently hosted a massive AI and UX meetup at Gurugram where students came from all over the country. And this is what they had to say. AI section, specifically the mid-journey section, was really insightful for me because I've not explored that before. I really want to ऐसे meetups उनके दोबारा हो and I will be gathering again and again. Ansh's energy was out of the world. Even though I'm not from the design background, I love this session and I would surely follow it up and learn more about UI events. And I recommend everyone, join these sessions and interact and come over here. I have already uploaded part 1 of my session on YouTube, which spoke about pro techniques and use cases of AI. But today we will talk about how to practically grow in your career, become a valuable professional in the market, and earn more money. So without wasting any further time, let's get started. Alright folks, welcome to segment 2. In segment 1 we did ChatGPT, we understood कि text कैसे generate होता है, ideas कैसे generate होते हैं, but अब we will do a deep dive into AI images, AI visuals, and particularly this tool called Midjourney. Alright, it's going to be a quick 25-30 minute session and then we'll disperse for our high tea, post which we'll have our UX design का session. So, फिर से जाते हैं अपने सर्वे में. मैंने सर्वे में सबसे पूछा कि आप लोगों में से कौन कौन मिडजर्नी करते हैं. काफी लोगों ने अभी तक मिडजर्नी यूज नहीं किया है, which means कि थोड़ा सा लर्निंग कर्व हो सकता है. तो आज मैं आपको मिडजर्नी तो नहीं सिखा रहा हूं, बट मैं आपको पॉसिबिलिटीज सिखा रहा हूं. एक बार आपको पॉसिबिलिटीज और बेसिक समझ आ गया, देन यू कैन ऑलवेज गो टू हाउ टू प्रॉम्प्ट एंड जस्ट क्विकली लर्न द बेसिक्स बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू शो यू द टूल. Agenda for segment number 2. सबसे पहले we'll directly jump to some pro techniques as to how do you get the best images in a tool like Midjourney. क्योंकि once you understand the pro techniques, I think basics will also be very, very easy. By the way, Midjourney prompting is not as complicated as ChatGPT prompting. It is way more easier, way more creative, way more easy to understand. Then we'll understand how do you make more money using AI. Now that you have all of these tools at your disposal, how exactly do you become a good asset in the job market? And at the very end, we'll have our questions. So now you can always note down your questions throughout the session. So let's start with module number 1, pro techniques on making images with Midjourney. Before that, let's just quickly revise some basics because there are some people who have never used Midjourney, right? How many of you have never used Midjourney? Never ever? Yeah, that's a good number of people. All right. So folks, Midjourney is a tool that you download in your desktop or your phone. The application is called Discord. तो ऐसे नहीं कि Midjourney की कोई ऐप है. Discord करके आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है and once you have that, which is available for free, you need to go on midjourney.com and create an account. Now Midjourney is not free. जैसे ChatGPT का एक free version है, Midjourney का कोई free version नहीं है. So that costs around I think $1,300-1,500 bucks a month. But once you get your paid plan, you need to install Midjourney in your Discord. अब उसका instructions मैंने इस YouTube video में दे दिया है. So once you go back home, you can always watch this video and keep it in your computer or your phone. Once you install your Midjourney, this is how your Discord will look like. तो जैसे ChatGPT में आप कुछ भी इनपुट डालते हो और आपको टेक्स्ट मिल जाता है, Midjourney के अंदर भी आप अपना टेक्स्ट डालते हो and you get images. बट फर्क ये है कि for every single prompt I put, I get 4 images in one go. अब जैसे ChatGPT में होता था, इसमें भी यही है कि your prompting plays a huge role. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि Midjourney से ना AI images बन जाती है, they assume that this is like Photoshop. That you can edit your pictures, you can create really good pictures. And जैसे Photoshop में पहले ग्राफिक डिजाइनर्स छोटी छोटी चीजें फाइन ट्यून करते थे, शायद Midjourney के अंदर भी वो पोस्टर्स बना पाएंगे. ऐसा नहीं है. Midjourney is essentially a stronger version of Google Images. जब आप Google Images से कोई पिक्चर लेते हो तो उसके 2 केसेस होते हैं. या तो आप उसको इंस्पिरेशन की तरह यूज करते हो, या आप उसको एज इट इज यूज कर लेते हो जो भी आपको गूगल ने दिया, या तीसरा आप मे भी उसको फोटोशॉप में डाल के इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट करके मिक्सअप कर सकते हो. Midjourney is just a better version for that. Now, अब मैं आपको जितने भी प्रैक्टिकल यूज केसेस बता रहा हूं, कीप इन माइंड दैट Midjourney is not going to solve them, but it's going to help you take inspiration for them. There's a big difference. When I say कि सोशल मीडिया पोस्टर्स एंड ग्राफिक्स के लिए काम आएगा, क्या Midjourney से आप सोशल मीडिया carousels बना सकते हो? No. But can you take inspiration? Can you generate ideas that are very relevant to you? Yes. So when it comes to social media, YouTube thumbnails,
decks हो गए, graphics हो गए, all of these things you can always get inspiration for each of these specific use cases. And then if you're into fashion, clothing, even physical product design, unfortunately UI के लिए it is not making any references. Mood boards बना देता है, but I find them very impractical. But for now, physical product design is doing a great job. For basic visual inspiration, it does a great job. And of course, AI avatars and face swapping तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. It was all over Instagram. So I'll tell you the problem statement कि यार इस tool की ज़रूरत ही क्यों थी. See, abhi when you go to the internet, if you have a very specific use case, you can't always find the right image. You go to Google, you type what you're looking for, and you get something close. For example, let's assume that I am designing a Batman suit, or maybe I'm doing a YouTube video that does a design breakdown of Batman's suit. Okay? And I have my own creative process, I have my own visual idea. I say कि यार, I want an opening frame जहाँ पे maybe I can show the X-ray of the Batman suit and let that be like a very cool starting point. Now, if I need to get this image from Google, if I were to search the same thing, I would get terrible results. So if I were to go on Google Images and type X-ray of Batman suit, these are the results that I would get. Now, this is so far away from what I visualized. Right? This is absolutely not cool और इसमें से कोई भी image हो सकता है open source ना हो, editable ना हो. I need something that begins from scratch. So now, with a tool like Midjourney, which is basically text to image, मैंने text डाला और मुझे image मिली. Inside Midjourney, if I type X-ray of Batman, portrait medical X-ray, ultra detailed, in less than 60 seconds, Midjourney would give me this. Now this is actually way better than what I visualized, क्योंकि this looks so cool, right? But अब तो मैं YouTube वीडियो बना रहा हूँ, तो ये तो static image है, तो या तो मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर सकता हूँ, या थोड़ा सा इस पे कोई effects डाल सकता हूँ. But now there are tools that convert image to video. So if I pick any of these images, let's just say I really like this one, I can take this image and go to this tool called Runway ML. How many of you have heard of Runway ML? Okay, so quite a few. All right. So Runway ML is basically dealing with videos. And when you go back home, search the word Gen 2 in Runway ML. That is text to video. Matlab, you don't even need to open up your camera. You need to describe your video and Runway ML will create it for you. But it is not that good yet because you're essentially starting from scratch. आपने text दिया और text उसने video बनाया तो उसमें क्या होता है, लोगों के चेहरे बहुत fake आ रहे हैं, हाथ नहीं बना पा रहा, complicated movement नहीं follow हो पा रही, तो it's not that practical. But इस same tool के अंदर they have this thing called image to video. Now this is a game changer and I'll tell you why. जो भी मैंने अपना Batman का image लिया, अगर मैं image to video के अंदर डालता हूँ, all I need to do is go to their tool and they have a free preview as well. I use the free plan for this. I uploaded my image and it created this video for me. So it created a very subtle movement of the same image. And now this is way better and I can always extend this. So by default, it gives me a 4-second image. But मैं चाहूँ तो 4 का 8 कर सकता हूँ, 8 का 12 कर सकता हूँ, whatever it is. And now this is a very good starting point. तो हुआ क्या, काफी लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट टू वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट डालें और मेरे को वीडियो आ जाए. अभी AI इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है. आप क्या करो, टेक्स्ट टू इमेज करो, एक इमेज ले लो और अब इमेज को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दो रनवे को and let it build on top of that. And look how crazy it is. Before you move ahead, I want to tell you about our latest learning website, howtoprompt.in, where you can get free AI resources, roadmaps, and step-by-step guides that will teach you everything that you need to know about tools like ChatGPT and Midjourney. Now, this is an example that I kept sharing in my previous sessions as well, but आज मैंने एक नया prompt run किया. So let's assume कि मुझे government से एक proposal आया कि अंश, we need help to design a better e-rickshaw. And this is something that nobody has ever imagined. How many of you have already seen this example? Can you raise your hands? Okay, not many actually. Good then. So, if I prompt something as simple as minimal futuristic design for electronic rickshaw for Indian streets, by the way, this doesn't exist, right? I really don't know what it will come up with. If I prompt this inside Midjourney, in 60 seconds it would give me these results. Now all four are completely distinct. They look pretty good actually, and this would be a good starting point for me to at least explore some creative visualizations. If I were to pick any of these, can you find something weird about this e-rickshaw? Of course, it doesn't even look like a rickshaw at this point. But there's one very distinct thing, and raise your hands if you can see it, not the folks who have seen this example before.
Look at this image carefully. There's something very, very special about this one image. Raise hands, you'll get a free gift. Yeah? Exactly. It's driverless. And there's one more thing. Notice there's one more thing. Now this पहली वीडियो में भी नहीं था. Yeah? Sensor कहाँ पे? साथ में वो like Are you talking about outside the auto or? Correct. So there's a dashboard sort of a thing in front of the seat. So what it's visualizing is that if it is a self-driving auto, there needs to be a panel where the person can input the destination. And if something goes wrong, that person can also stop and do a halt, which is very, very interesting. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, क्या मैंने इसको ड्राइवरलेस, बीच में पैनल डालो, क्या ये सब चीजें स्पेसिफाई करी थी? नो. बट मिड जर्नी फिल्ड इन गैप्स फॉर मी. मैंने एक बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया एंड इट एडेड न्यू थिंग्स टू माई जेनेरिक इमेज. So AI is not just about making things look pretty, but it can actually help us take a look into the future. I'll show you one more very cool example. It helps you see things that don't even exist. और आज मेरे दो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर है, शानिल एंड तन्मय. This is a picture of us. So you'll see them now, and this is a picture from our school days. On the left, we have the original image. And on the right, you have the generate AI image. So basically on the right side, everything that you see beyond my arms and hands, that has been generated by Photoshop AI. They have this new feature called extend, and when you extend it, it adds in more details to the same image. Now this is groundbreaking, and I can take this to the next level by extending both sides, upar, niche, left, right, everywhere. Now folks, on the left side, जो भी आप black and white में देख रहे हो, वो original image थी. उसके बाहर जितना भी image है, that has been visualized by AI. Absolutely groundbreaking stuff. Nobody knows where reality ends, where AI begins. So seamless, and this is just the starting. This is the latest, worst AI will be. So let's understand what is the structure of a mid-journey prompt. जैसे हमने ChatGPT checklist की बात करी है, mid-journey में कैसे prompt दिया जाता है? It's way more simpler. This is how it looks like. जब आप अपना Discord install करोगे, you need to type /imagine. This is a rule. /imagine type करने के बाद you first describe your scene कि आपको image में चाहिए क्या. After you've described your scene, you need to talk about your style. कि क्या एक illustration है, क्या एक photo है, क्या एक 3D render है, the visual treatment of it. And the very last thing is a parameter. A parameter में हम ज़्यादा deep नहीं जाएंगे, but कभी-कभी आपको एक specific resolution का image चाहिए होता है, specific chaotic style चाहिए होता है, तो थोड़ा सा technical details में अगर आप जाओ, तो that is what parameters are for. Now let's take a quick example. Let's say I imagine North Indian wedding dance performance, because I love North Indian weddings. Then in my style, I will say photographic and ultra detailed. Basically, I want something that looks really, really real. अब आप देख रहे हो कि पैरामीटर में मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है. इट्स नथिंग. इट्स जस्ट दैट मिड जर्नी में जब आप प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट देते हो तो इट गिव्स यू अ स्क्वायर इमेज, और मुझे वाइड इमेज चाहिए, तो यू कैन डिसाइड द एस्पेक्ट रेशियो. हाउ डू यू डू दैट? सिर्फ आपने टाइप करना है -AR 16:9. If you do 9:16, it will give you a tall image and so forth. Basically, it's just to set your aspect ratio. As soon as I give this prompt, in less than 60 seconds, these are the images Midjourney will generate for me. Now this is crazy because some of them look super, super real. Let's pick one of them. The outfit, the lighting, of course the expressions are slightly weak, but pata hai kyun? Because my prompts were weak. So I've given a pretty basic prompt. That's why you are seeing some things that are sort of gibberish. But latest worst, pretty impressive. अब एक काम करते हैं, सीन डिस्क्रिप्शन में सेम रखूंगा, सेम, सिर्फ स्टाइल में चेंज करूंगा. दिस टाइम आई मेक इट साइंस फिक्शन, अल्ट्रा डिटेल्ड. नाउ इंडियन शादी, साइंस फिक्शन, ये कंप्लीटली पोल्स अपार्ट है. विद दिस प्रॉम्प्ट दीज आर द रिजल्ट्स आई गेट. नाउ बोलो कि इतना तो साइंस फिक्शन ही नहीं है, बट फॉर सम रीजन they've played with fire a lot. It has a very warm undertone to it, but I really like this one. It has a very airbender sort of a vibe. Right? Like pretty cool. This is not bad at all. It gives us a very superhero vibe.
एंड ऑफ कोर्स फेस थोड़ा सा जिब्रिश है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट हैंड्स ठीक से क्रिएट करे. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिडजर्नी हाथ और आंखें नहीं क्रिएट कर पाता था. एनी टाइम यू वांट टू चेक ना कि कोई इमेज AI जनरेटेड है, यानी उनके हाथ और आंखें देख लो, बिकॉज AI इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद मेकिंग हैंड्स एंड आईज. अब एक काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग कंप्लीटली ऑफ. इस बार मैं स्टाइल में लिखूंगा 3D रेंडर पिक्सार एनिमेशन, which is so specific, as if there was an Indian wedding inside a Pixar movie. At this point, we get this. अब मैं एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि नोटिस करो मैंने सीन डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं चेंज किया है, सिर्फ स्टाइल चेंज कर रहा हूं मैं. एंड लुक एट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट जनरेट्स. लेट्स पिक वन ऑफ दीज. I love this one. It's almost like a scene from Toy Story, you know? Like if Toy Story had a Shaadi wala scene, because you can see all the toys at the back and they also have like Barbie sort of material. But pretty impressive stuff. Now imagine what this can do for filmmakers and mood board creators and storyboard makers. यहाँ से शुरुआत होगी अब लोगों की. अब जो बंदा हाथ से बना रहा है अब उसका सोच लो, और जो यहाँ से शुरू कर रहा है अब उसका सोच लो कि दोनों में आउटपुट्स का कितना फर्क आने वाला है. If that person really knew how this thing works. I saw this meme, it said to replace graphic designers with AI, clients will need to accurately describe what they want. So we are very safe. क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम्पल्स में आपको रियलाइज होगा कि ये डिजाइनर के लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है. जो हवा बन गई ना मार्केट में कि अब तो डिजाइनर्स को फायर कर देंगे, हम ही बना लेंगे सब कुछ, डिजाइनर को स्ट्रगल हो रहा है समझने में, तो नॉन डिजाइनर तो कहाँ से ही शुरू करेगा. इनफैक्ट देयर इज अ न्यू अल्टरनेटिव जिसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं. इट्स कॉल्ड आइडियोग्राम, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे गोना बी अ बिग कंपेटिटर टू मिडजर्नी. एंड आइडियोग्राम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? इट कैन क्रिएट टेक्स्ट. जो आप लेफ्ट पे इमेज देख रहे हो ये AI ने बनाई है. मिडजर्नी टेक्स्ट नहीं बना सकता. आप विजुअल्स बना सकते हो, बट मिडजर्नी से क्राउड्स नहीं बना सकते, स्टोरीज नहीं बना सकते. अब अगर आइडियोग्राम आ गया और सेम प्रॉम्प्ट टेक्निक्स आइडियोग्राम में भी काम आ गई, सो दिस विल क्रिएट टेक्स्ट एज वेल. तो अब दो चीजें होगी, या तो मिडजर्नी में भी टेक्स्ट आ जाएगा या आइडियोग्राम विल विन द गेम. एंड वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, बट दे हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी. दे हैव सम वेरी स्मार्ट पीपल ऑन बोर्ड and they've been working on like really good projects at Google, at Berkeley, so the team is also very legit, and they just raised 16.5 million. So I'm very excited कि इसके साथ क्या होने वाला है folks. तो दिसंबर जैन में हो सकता है हम सब फिर से मिले और दुनिया completely तब तक flip हो चुकी होगी. Do you know this guy? Who knows this guy? Raise your hands. Yeah? You know his name? What is his name? Anyone knows his name? Very close. Oh, you surely get a prize. What is your name? Shreya. Riddhi just remember Shreya's name, Vani. She deserves a prize. So this is the creator of Midjourney. But David की ना कहानी बहुत special है. Let's go back 5-6 years ago. मैं ना अपने college में था. I was doing my BTech and I was in my second year. And I was working with a senior of mine. मैं उनके ना hostel में गया. And keyboard और mouse के right side पे एक छोटा सा इतना सा black device पड़ा हुआ था. And उस पे लिखा हुआ था Leap Motion. तो साहिल भैया नाम है उनका. मैंने साहिल भैया से पूछा कि साहिल भैया ये क्या है? तो साहिल भैया ने बोला कि यार इस पे अगर तुम सिर्फ हाथ ऐसे फ्लोट करोगे ना, इट विल एक्ट एज योर माउस एंड कीबोर्ड. इट्स कॉल्ड लीप मोशन. मैं बोला तो बहुत ही बढ़िया है. मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा. इट वाज एक्चुअली वर्किंग. आई डोंट हैव टू यूज द माउस, आई डोंट हैव टू यूज द कीबोर्ड. तो आई वाज फ्लोटिंग माय हैंड अराउंड लीप मोशन एंड इट वाज वर्किंग. डेविड क्रिएटेड लीप मोशन. दिस इज लाइक 5-6 years ago and it was a ground breaking product. एंड अभी मैं थोड़ा सा डिटोर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. मिड जर्नी क्या कर रहा है, कैसे बना रहा है, इससे भी एक बिगर पिक्चर का लेसन है कि मिड जर्नी ही कैसे बना, क्योंकि इसके पीछे लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेसन है दैट एज डिजाइनर्स वी नीड टू लर्न. तो मैंने सार भैया को बोला कि आपने खरीदा कैसे? उस टाइम इंडिया में लीप मोशन अवेलेबल नहीं था, कोई उनके लिए यूएस से लेके आया था. तो मैं बोला कि यार अब तो कीबोर्ड और माउस रिप्लेस हो जाएंगे, दिस इज इन 2017. सार भैया ने बोला हाँ बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगे. Fast forward, Leap Motion failed. The company was shut. David had to just sell this company to somebody else. And then after Leap Motion, David started Midjourney. अब क्वेश्चन ये है कि मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया है. I saw how groundbreaking it was. Then why did Leap Motion fail? सबसे important point, folks, and there's this book called Hooked. I don't know how many of you have read it. It's a brilliant book. I would recommend you folks to read it. In fact, the social media का भी prize में one of the books is Hooked. तो हुक्ड ये बताती है कि जो कस्टमर है ना, दे इरैशनली वैल्यू द ओल्ड, और जो नए स्टार्टअप्स आते हैं दे इरैशनली वैल्यू द न्यू.
कस्टमर को पुरानी चीजें बहुत पसंद है और इरैशनली पसंद है, बट जो नए स्टार्टअप्स आते बोलते हैं हम तो रेवोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, आप लोग थ्रो क्यों नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड माउस, हमारा प्रोडक्ट यूज करो, हम कितने बेटर है। तो हुक ये बोलती है कि अगर आपका प्रोडक्ट 1 टाइम्स या 2 टाइम्स बेटर है तो कस्टमर उस पर शिफ्ट नहीं करेगा, बिकॉज कस्टमर्स इरैशनली ओवर वैल्यू द ओल्ड। लीप मोशन वॉज जस्ट सिग्निफिकेंटली बेटर देन द कीबोर्ड एंड माउस, क्योंकि अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं लीप मोशन पे हाथ रखूं या माउस पे हाथ रखूं, मेरे को तो बैठना ही पड़ रहा है और आर्म्स यूज करने ही पड़ रहे हैं। सो इट्स जस्ट अबाउट मी फ्लोटिंग इन द एयर रादर देन टाइपिंग। So even though it was a very cool device, the experience was not exponentially better. Now let's take Uber. Uber ka experience is actually really better than finding a cab. It is not 1 times better or 2 times better. It might be 5 times better than what is available in the market. And Leap Motion was a physical product. तो physical products में पैसा बहुत खर्च होता है. And even the final outcome is also very expensive. तो David ने इस बारी जब Mid Journey खोला, David made it on Discord. Discord is a free platform. David ने बोला मैं वेबसाइट भी नहीं बनाऊंगा इस बारी, इतना कॉस्ट कटेल करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई मार्केटिंग नहीं करेंगे, कोई सेल्स टीम नहीं रखेंगे, बट प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जो 1 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स बेटर होगा विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। सो हम सब आज मिड जर्नी की तो बातें कर रहे हैं, बट मिड जर्नी तक की भी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, because he just didn't come out of this thing out of thin air. He had to go through a failure of Leap Motion to actually come up with this idea. Go back home and read about him. It's a pretty cool study. The link to download this presentation will be in the description, but there's a password for it, and this is the password. Please make sure that you copy this password before you download the presentation. Coming back to the syllabus, there's one parameter that I want to share, which is aspect ratio. मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको इसका डेमो दिखा दूं. So basically it's --AR, and आपने क्या करना है that --AR के बाद स्पेस छोड़ना है, एंड देन यू राइट योर नंबर, एंड नंबर में क्या होता है जो पहला डिजिट है दैट विल डिफाइन योर विड्थ एंड दूसरा विल डिफाइन योर हाइट। सो 16:9 एज यू नो वुड क्रिएट अ वाइडर इमेज। सो अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालोगे उसके एंड में आपने ये --AR 16:9 लिखना है, एंड यू विल एंड अप विद पिक्चर्स दैट लुक रियली वाइड। आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। There's a website on Midjourney documentation, so it's called a parameter list. जैसे मैंने आपको aspect ratio सिखाया ना, अगर आप Midjourney की documentation पे जाओगे, you can learn all of these parameters for free. So आपको जितने भी possible features हैं, you can always refer to the documentation. I saw this meme, everyone, AI will replace designer's job, AI accepting the job. These are some Midjourney renders of handshakes. Because जब आप भी Midjourney use करोगे, you realize it's actually not that good. तो folks, जैसा market में portray किया जा रहा है, वैसा एक्चुअली है नहीं। एंड मुझसे काफी ब्रांड्स पूछते तो अच्छा मिडजर्नी रेंडर को एज इट इज प्रिंट के लिए दे क्या, बैनर्स प्रिंट कर ले, फ्लायर्स प्रिंट कर ले। इट वोंट वर्क आउट, बिकॉज पहला तो नोबडी नोज कि इसके कॉपीराइट रूल्स क्या होने वाले हैं, दूसरा द रेजोल्यूशन माइट नॉट वर्क। आप अपस्केल कर सकते हो बट द क्लैरिटी इज रियली नॉट दैट गुड। सो यू डोंट जस्ट डायरेक्टली यूज इट फॉर प्रिंट, यू कैन यूज इट फॉर इंस्पिरेशन but don't directly send it for your commercial use. Now एक interesting use case है that within Midjourney you can specifically declare rendering engines. What does that mean? ये कुछ rendering engines हैं, we've covered this in our previous videos. इन rendering engines को जब मैं use करता हूँ तो मैं ना style के बाद ही rendering engine डाल देता हूँ, and I'll show you इससे फर्क क्या आता है. On the left we have dog running on the surface of Mars. On the right side मैंने सिर्फ Pixar और 16 के लिखा है and look the change. Scene description is same but on the right side it looks like a cute screenshot from a Pixar movie poster. On the left we have a giant octopus playing drums on the beach. Right side पे मैंने same prompt के आगे लिख दिया vector graphics and it created a solid vector illustration out of it. Now you can take this vector illustration, put it in a tool like Vectorizer and you will have editable CorelDRAW files, editable Adobe Illustrator files, and then you can pick elements out of it and build on top of that. So it's a really useful use case if you're into vectors and illustrations. फिर एक कॉम ने हमेशा डिस्कस करा है कि यार हम क्यों मिडजर्नी का प्रॉम्प्ट डाले, ChatGPT को सिखा देते हैं। तो मैंने भी वही किया because I'm a very lazy person. तो then this is all revision by the way, we haven't started the module. ChatGPT में I engineered a prompt where मैंने उसको बोला कि ये Canon और Nikon की बुक्स है, ये तू पढ़ ले, and then मैंने उसको सिखाया कि Midjourney काम कैसे करता है, and then I started getting prompts from ChatGPT for my Midjourney, and when that happened I started getting images that look like this.
Now this is ultra hyper realistic images, but ये image ऐसी क्यों आई? क्योंकि जो इसका prompt था वो सारा का सारा ChatGPT ने सोचा था. तो मैंने तो सिर्फ लिख दिया था cool picture of a gladiator, but the result that ChatGPT gave me look like this. जहाँ पे कैमरा भी स्पेसिफाइड था, शटर स्पीड भी है, ISO भी है, सीन डिस्क्रिप्शन भी. अभी इंसान तो सोच ही नहीं सकता इतनी डेप्थ में. आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपके लिए ChatGPT सोच लेगा. I started creating some renderings of Indian aesthetics and Indian interiors. This image is also pretty cool, but the prompt behind it looks like this. क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी बैकग्राउंड से भी तो आपको रियलाइज होगा कि सीन डिस्क्रिप्शन से ज्यादा लाइटिंग, कैमरा का लेंस, ये बहुत मैटर करता है. You can have a really gorgeous scene captured from a terrible camera at terrible settings and the image will not look pretty. And you can have something very ordinary looking, but if the camera is really good, if the lighting is good, the output will come out to be really fantastic. But you don't have to come up with it. You can always train ChatGPT for it. So there's also one more feature that very few people talk about, कि आप ChatGPT की तरह टेक्स्ट डालते हो मिडजर्नी में और टेक्स्ट से आपको इमेज मिलता है. आप मिडजर्नी के अंदर इमेज डाल सकते हो और वो इमेज पढ़ के आपको टेक्स्ट दे देगा. तो कभी आपको कुछ बहुत कूल सा इमेज दिखा इंटरनेट पे, या किसी का मिडजर्नी रेंडर दिखा बहुत बढ़िया, आपने सोचा इसने क्या प्रॉम्प्ट किया होगा, आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है. यू टेक दैट इमेज, यूज द /describe कमांड. जैसे हम /imagine करते हैं, आप लिखो /describe और उसका मिडजर्नी इमेज डाल दो. मिडजर्नी विल टेल यू कि इसके पीछे का प्रॉम्प्ट क्या है. सो यू कैन ऑलवेज रिवर्स इंजीनियर एनीबॉडीज वर्क. फुल ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो बैरियर्स हियर. And it will give you 4 different texts of the same image. पूरा image पढ़ के आपको वो बताएगा कि मैं as Midjourney इसको कैसे पढ़ता हूँ. So it's a pretty useful feature. So yeah, this point we've covered. So quick revision of module 1. AI is not just about making things look pretty, but it is also helping you take a look into the future. And you can't use it directly for commercial purposes or for print, so always use it for inspiration. And at the very end, your output quality will depend on your vocabulary. What you type, how you frame your prompt, and if you don't think कि मेरे से खुद से हो रहा है, just train your ChatGPT for it. So your CTA from this module is that you need to explore prompts for things that do not exist. जैसे मैंने ई-रिक्शा का prompt दिया, right? सिर्फ मिडजर्नी को existing चीजों को prettify करने के लिए use मत करो. Figure out if you can use Midjourney to create something that doesn't exist, and that is where you will use AI to its full extent. Your second call to action will be build a mood board of Midjourney images, because as I said, print के लिए तो use होगा नहीं. It is used for inspiration. So the next time you're making a website or a landing page or a brochure or a marketing campaign, try to use Midjourney images and create a mood board out of it and see if you're able to pick patterns, if you're able to pick things from that. And at the very end, set up an agent for writing your Midjourney prompts. Go back home, create your ChatGPT agent, train that AI, feed it examples, and just use ChatGPT to prompt your Midjourney. With that, we come to module number 2, कि as to जितने भी लोगों को भी skills आ रही है, who are the people who have maximum leverage and how exactly are they making more money. अब सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार हिस्ट्री समझ गए then you'll understand कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है. आपको पता है it took around 500-600 years for mankind to shift from stones to an axe. आपको पता है axe बना कैसे था? सबसे पहले we were just stuck with stones. शार्प पत्थर्स ढूंढते थे, उनको खटका के we used to create fire. स्टोन से ही हंटिंग करते थे, स्टोन से ही सब कुछ करते थे for 500 years. 500 years तक. फिर एक आदमी को ख्याल आया कि यार मुझे इसको एक स्पीड से फेंकना है. अब स्पीड से फेंकने के लिए मुझे इसको हिट करना है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए. तो उसने क्या करा, इसको एक स्टिक से बांध दिया. और जैसे ही उसने स्टिक से उस पत्थर को बांधा, उसके दिमाग में बत्ती जली. तो बोला ये तो कमाल हो गया. स्टिक रहती थी, स्टोन भी रहता था. जिंदगी में पहली बारी किसी एक इंसान ने दोनों को बांध दिया. एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन एक्स. और फिर एक्स के बाद आया हैमर. अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज हो रही है बट इन अ मच मोर मॉडर्न वे. टू गिव यू अ क्विक एग्जांपल, पहले हम सब लोग पेंट ब्रशेस, पेपर, कलर्स, इन सब पे पेंटिंग्स बनाते थे. बट धीरे धीरे फिर आईपैड आया और वो सेम स्किल सेट, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम ट्रेनिंग फिर प्रोक्रिएट पे शिफ्ट हो गई. आईपैड पहले एग्जिस्ट करता था, करेक्ट. आईपैड से पहले मोबाइल एग्जिस्ट करता था, करेक्ट. मोबाइल से आईपैड आया, यहां से आर्टिस्ट ने ऐप बनाई एंड वी कनेक्टेड द स्टोन टू अ स्टिक एंड वी क्रिएटेड एन एक्स. अब इसका मतलब ये कि एक्स ने इंसान को रिप्लेस कर दिया? नो. क्या एक्स ने स्टोन्स को रिप्लेस कर दिया और स्टिक्स को रिप्लेस कर दिया?
Absolutely not. There's still a market for people who use pen and paper. If not for scale, but at least there are people who still work on the pen and paper. And of course, scale इसमें है क्योंकि टेक्नोलॉजी में स्केल है, ब्रिक एंड मॉर्टर में स्केल नहीं है. तो अगर आप लाइफ में किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी डाल दो कि आप स्केल कर जाओगे, एंड स्केल में ही रेवेन्यू है. सो जनरेटिव एआई, जिस इस पूरी फील्ड को बोलते हैं जनरेटिव एआई, ये क्या कर रही है? इट इज एसेंशियली रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन ब्रेन. जो आप ये इमेजेस देख रहे हो ना मिड जर्नी की, ये कहाँ से बना रहा है? ये एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट कर रहा है. और जनरेटिव एआई में एक चीज होती है न्यूरल नेटवर्क्स. ये सारे वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इनके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है. हमारे ब्रेन में ना जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है. वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर न्यूरॉन्स, एंड इट इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट अलाउज अस टू थिंक. सो आपके ब्रेन में इमेजिन करो, इट्स अ क्लाउड ऑफ न्यूरॉन्स, एंड एवरीथिंग दैट यू एवर स्टडीड, एवर सीन इज जस्ट फ्लोटिंग इन दोस क्लाउड्स. योर न्यूरॉन्स कनेक्ट द डॉट्स, and it is because of your neurons that you can find patterns. Artificial intelligence के अंदर जो generative AI वाली category है, that is trying to copy the same. तो जो machine के neurons होते हैं, जो उसका network है, there's a technical word for it, it's called neural networks. अब मजे की बात ये है कि जो हमारा brain है ना, उसमें data कम है, but the number of connections is exponential. Our brain is extremely complicated. AI पे data ज़्यादा है, but connections कम है. Can you see what's happening? My brain has 1,000 times more neurons, but हो सकता है मेरे पास इतना image का training data नहीं है. तो मेरे पास जितनी भी 10-5 चीजें होती है इंस्पिरेशन के लिए, मैं उसमें से बेस्ट करता हूँ. बट हम फोक्स कितना आगे आ गए हैं लिमिटेड डेटा के साथ भी. लुक अराउंड यू, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू is been a result because we have more connections in our brain than any other species on the planet. जबकि जो AI है, it has more data for sure, it has more memory. So you need to leverage your more connections with AI's more data. I'm saying use your neural networks with AI's neural networks. And I'm explaining all of these things because अब आपको भी understanding होनी चाहिए कि actually में किस चीज का क्या benefit है. AI में कौन better है, humans किस चीज में better है. So अगर आप design से हो या marketing से, you realize that in almost every creative profession, even in non-creative professions, you always get a brief. And इसका technical word है, it's a creative brief. That you have a creative brief or a project requirement document, it's called a PRD, before you start your work. The thing is that before you even pick the pencil, you need the creative brief, correct? Can you design something without getting a brief from your client? तो आपके clients कुछ आपको एक document देंगे, you take that document and then finally you create the artwork according to those guidelines. You need to do the same in Midjourney's case. Your prompt is the creative brief for Midjourney. It's almost like you are the customer and Midjourney is the designer. And then all of your prompts together build up a PRD. So you have to think कि एक sentence जो मैं डाल रहा हूँ needs to have a logical structure. जैसे PRD में structure होता है. अगर मैं किसी designer को एक jumbled up PRD दे दूंगा तो क्या product बनेगा? नहीं बनेगा. Similarly, even your prompts need to have the structure. And there's this very interesting guy, Biju Dominic. I have never spoken to him. But he uploaded some very interesting articles and a bunch of quotes. And he said, an AI tool could be like a brush in the hands of an artist. And at the first impression, this seems like a pretty common quote. But this is the same thing जो मैंने आपको example दिखाया ना कि हम brush से Procreate पे आ गए. It is a similar thing. Instead of the brush is probably going to be a place where you can enter your prompts. And the biggest examples of how big brands are using AI in prompt engineering will show you कि अब companies को realize हो रहा है कि यार AI से कितना time बच सकता है. So now we need people who are in the intersection of creativity and technology. And I'll show you some concrete examples, right? So Coca-Cola invited a bunch of digital artists to create this marketing campaign. उन्होंने अपना खुद का एक sort of mid-journey बनाया. वहाँ पे artists आए and they added prompts. अब specialty ये थी कि आपने अगर लिखा astronaut, तो एस्ट्रोनॉट तो बनाएगा बट एस्ट्रोनॉट के हाथ में कोका कोला की बॉटल होगी. First of all, we're at the forefront of an incredible new technology and capability. We believe it's part of our ongoing marketing agenda, the transformation of our marketing agenda. So now you can be very, very creative, but there's one thing that every single image will have a Coca-Cola bottle in it. And they created a beautiful marketing campaign out of it. Nestle is now using AI to recommend coffee and automate all of their customer support. Because essentially a lot of customer support was all about answering questions which was a prescribed task.
Then on the other hand, we have Marvel, जिनको थोड़ा सा इसमें backlash मिला था, but they recently created an intro video for one of their shows using AI. It's probably using Stable Diffusion and Runway ML. पूरा का पूरा intro sequence. आप सोच सकते हो कि intro sequence से पहले कितने लोग hire होते थे. Story boarding होती थी, mood boarding होती थी, scripting होती थी, कितना कुछ होता था. And then Nike is using their analytics to personalize all of their customer experience on their apps. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, तो हम प्रेटी श्योर छोटे ब्रांड्स भी करेंगे, और जब छोटे ब्रांड्स करेंगे, दे विल नीड पीपल who understand a bit of AI and a lot about their subject, a bit of prompt engineering but a lot about systems and scale. And folks, पैसे कमाने का जो ये आजकल tactic है, specifically in jobs, it's not that difficult to become valuable to the market, right? If you know what you have to learn and if you spend time on it, all you need to do is become really valuable to the person who's coming to hire you. Heinz did the very interesting campaign. What they did is they went to Midjourney, Stable Diffusion, to many AI platforms. And they said, show me how a ketchup bottle looks like. So this is their own show off. कि अगर हम AI को भी बोलते हैं ना कि मुझे ketchup bottle बना के देगा, तो वो Heinz की ही bottle बना के दे देता है. Because majority of the internet feels कि this is how a ketchup bottle looks like. So ये सारे भी आप renders देख रहे हो ना, they were all generated by AI. तो Heinz was showing off कि देखो AI के लिए Heinz ही है, बाकी सब तो कोई चांस ही नहीं कि हमारी बॉटल्स को कॉपी कर पाए. सो इट वाज अ ग्रेट कैंपेन. आर दे फायरिंग डिजाइनर्स? आर दे रिप्लेसिंग डिजाइनर्स? नो, बट दे आर यूजिंग AI very creatively. So yeah, this is a cool campaign. You should read into the details of it. Of course, everything is available on Google. There's one video that we've uploaded. It's a 60-minute long video जिसके अंदर मैंने Midjourney को बहुत डिटेल में सिखाया है, तो मुझे ये सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. जिसके अंदर मैंने सारी रिसोर्सेज भी शेयर करी है कि अपनी वोकैबुलरी कैसे बढ़ानी है, विजुअल स्टाइल्स कैसे बनाने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाटएवर इट इज, इट्स ऑल अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कैन इंडिविजुअल्स डू एंड व्हाट विल बिजनेसेस डू. Folks, for individuals, and all of you are individuals, ideation, communication, and visibility are the most important things after your skill sets and prompting. Now, let me explain why. Because you can have good skills, you can know a bit of prompting, and even then you will not be able to ace that top paying job. मैं आपको तीनों का वैल्यू बताता हूँ. Ideation तो आपको समझ आ गया है, because execution automate होगा. Communication में there are two categories, written communication and verbal communication. I still find a lot of people not practicing written communication. They write terribly. And I'm telling you, if you can't write clearly, it shows that you can't think clearly. It all starts with your writing skills. So please spend some time documenting on LinkedIn, documenting on Notion. Build a habit of writing clearly and crisply. Next is visibility. It doesn't matter how good you are. If you're not visible to the right set of people, you will never attract the right opportunities. So if you've seen my UX का video, मैंने एक YouTube video बनाया, Insider Tips for Getting a High-Paying UX Design Job. उसमें I've given a step-by-step framework of how you can connect with more people on LinkedIn, so that when you post something on LinkedIn, the right kind of people can notice you. अब लोग क्या कर रहे हैं? LinkedIn पे अपना काम डाल रहे हैं. LinkedIn पे तुम्हारे दोस्त कनेक्टेड है तुमसे, तुम्हारे दोस्त देंगे तुम्हें जॉब. कोई रिक्रूटर कनेक्टेड नहीं, कोई VP कनेक्टेड नहीं. क्या फायदा है फिर ऐसे LinkedIn पे डालने का जब आधे लोग तुम्हें देख ही नहीं सकते? So please make sure that you're visible. For businesses, they only need 3 things moving forward: talent, and of course, capital, that is money, it's a fancy word for money, and distribution. So talent का मतलब हो गया folks who know prompt engineering, right? Finding the right talent is going to be the biggest challenge because बहुत कम लोगों को ये सब आता है. Capital to scale, to pay the talent. And at the very end, distribution. Distribution का मतलब ये कि in every store you can find a Parle G. क्यों? Because Parle G ने distribution crack कर लिया है. आप कहीं भी जाओगे, you will find a Parle G, and distribution आपको सुनने में आसान लग रहा है. Distribution crack करना is one of the biggest challenges ever. अगर किसी दिन मैं मार्केट में Parle G का कंपेरेटर लॉन्च भी कर देता हूँ, which tastes better, which is at the same price point, which looks better, if I haven't cracked distribution, तो कौन खरीदेगा? So if you're planning to start a business, if you're planning, or even if you're running a business, please make sure that you consider these 3 points. And in fact, these are some cameras. I just want to share this list before we end the session, that if you use these cameras in your Midjourney prompts, the quality of your results will be really, really high. And we'll upload all the decks on TagMango, folks. So you'll have access to the entire PDF in TagMango. So yes, that would be the end of the entire AI session, and hope you had fun. And now we'll open the floor for questions. First, let's have a show of hands.
And before you ask your questions, folks, last time हमने questioning round करा था. There are some guidelines that you need to follow while you're asking your question. सबसे पहले your question should end in 60 seconds. मुझे last time 2-3 लोगों ने पूरी कथा सुना दी थी और अभी क्या है, लोग थक गए हैं इतना ज्ञान सुन के. तो प्लीज क्रिस्प क्वेश्चंस पूछना, 60 सेकंड्स में अपना क्वेश्चंस खत्म करना. एंड प्लीज स्किप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सॉरी, प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछो कि मेरा ना ये हो रहा है वो हो रहा है, आप मुझे बता दो मैं करियर में क्या करूँ. अपना पूरा दुख दर्द नहीं सुनाना है. प्लीज आस्क क्वेश्चंस विच आर टैक्टिकल एंड डोंट से कि मैं फिग्मा कैसे सीख लूँ, यूएक्स डिजाइन कैसे सीख लूँ. मैंने अपने एक मेंटर से ये सीखा था. उन्होंने मुझे सिखाया कि अंश, तुम किसी भी अगर नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो और तुम किसी इंपॉर्टेंट आदमी के सामने खड़े हो, प्लीज मेक श्योर कि तुम कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछो जो तुम गूगल या यूट्यूब से पूछ सकते हो. आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, सबसे पहले गूगल से पूछना है, फिर यूट्यूब से पूछना है. अब तो इनफैक्ट चैट जीपीटी से भी पूछ लेना. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ये तीनों नहीं बता पा रहे, तो हम उसको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड्स टू लेट्स सी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस येट? 1 2 3 on this side. No questions on this side. Oh, perfect. So I think we'll have to sadly go for the high tea because caterers कह रहे हैं हम बहुत थक गए हैं. So let's disperse for the high tea, folks, and we'll pick the questions after the session. All right, folks. Thank you. You will find all the relevant resources and the link to download the PDF in description. If you're here for the first time, make sure you click on subscribe and hit the bell icon so that you never miss an update. Let me know in the comment section if there's something specific you want me to cover in the next video. We make content on design, AI and technology to help you upskill for free. I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.